Now let us discuss another concept on which we have the numericals based, is the calculation of power itself. So first of all, let me ask you whether the diesel engine part has been covered. I think Mr. Gulati takes that topic. Maybe not for the current batch, those who joined this month, but other maybe this batch also, I am not sure. Has the diesel engine been discussed in your class? Not with September batch. Not with September, but what about the other batches? भाई कुछ तो बोलो, yes or no. Just keeping quiet doesn't help, na? I must know where you stand at the moment. Okay. All right. So let me then. So we are developing here a concept of power first. All right. So let me unshare this first and share a whiteboard. So we are going to do calculations on the power developed by an engine. Okay. So for that purpose, we need to know certain definitions, and that is what we are going to see. First thing is that the combustion takes place inside the cylinder where fuel is burned, and we call it liner and piston. So we have a liner here. So I will be only discussing as far as it is necessary for the calculation of the numerical or solving the numericals. The topic itself will be dealt with by another faculty. So I'll confine myself to the basic concepts here, which I'll be using for solving the numericals. So this is the liner, and what I'm showing inside the liner is the piston. And I'm just drawing a single line diagram, except this is the piston. Now this will be coming here. This is the piston rod or connecting rod, as the case may be, depending on whether it is a crosset type or a trunk type unit. This is the crankshaft. The piston, when it is in the uppermost position, that is called TDC position, and the lowermost position is called the BDC position. This is a bore, or the diameter of the piston. So this is the piston
With a piston rings in it for sealing. This is the liner, and this is the TDC position. TDC stands for top dead center. So as the engine rotates, so this is a shaft which if I turn in clockwise direction, let us see for one revolution, what will happen? This is the crank throw. So with the help of connecting rod, this piston goes up and down. This is the lowermost position of the piston. As it turns, it can come down up to this position. No more. That is the lowermost position. So that is why it is called BDC, BC, bottom dead center. Now dead, two times we have seen top dead and bottom dead. The reason is as the engine runs, when the piston is going up, reaches the uppermost position, for a moment it stops going up, so we say it has become dead. Now it is not moving up, and then it starts coming down. So uppermost position is called top dead center, where the piston stops going, and then it will continue to come down and eventually reaches the position below which it will not go, and then it goes up. So this is the manner every time it will happen, and the distance traveled by the piston from BDC to TDC is called stroke. Stroke of the piston. D is the diameter here. Now we have two types of engines. We have two-stroke and four-stroke. There are four operations which happen in case of a internal combustion engine. That is suction, that means taking air for combustion process, compression, compressing the air, and because of the heat of compression which is used for burning the fuel, and then the power stroke where the power is developed and then exhaust. So these are the four things which happen in any diesel engine, whether it is a two-stroke or four-stroke. In case of a two-stroke engine, all these four processes happen in two strokes of an engine. That means one stroke is going from BDC to TDC is one stroke, and during this process, an piston will travel equal to distance L. Second stroke is coming down again from TDC, so BDC. That is two strokes. In case of a two-stroke engine, four processes: air intake or air suction, compression, power stroke, power development, and four is exhaust. These four things are happening in two strokes, and two strokes means one revolution of the crankshaft. So when the crankshaft, which is it rotates by one complete 360 degree, that means one revolution means rotation of 360 degree. The piston will have two strokes. It goes up, comes down here, back again. The four things are happening in two strokes. So that type of engine is called two stroke. In this two stroke engine, since the two strokes are happening in one revolution, out of which we have one power stroke, that means power is developed in every revolution of the engine. Every revolution there is power developed because there is power stroke in every revolution. Whereas in a four-stroke engine, the engine goes up one stroke, comes down piston, second stroke, goes up again, third stroke, comes down again, fourth stroke.
in 4 strokes, which will happen in 2 revolutions, power is generated only in one revolution or 1 stroke. So that means in case of a 2-stroke engine, every revolution there is a 1 power stroke. In case of a 4-stroke engine, 2 revolutions there is 1 power stroke. So we can write here 2-stroke engine, every revolution crankshaft there is 1 power stroke. In case of 4-stroke engine, in 2 revolutions, 2 revolutions of crankshaft, we have 1 power stroke. Is this point clear? Now, let us see when. Is it okay, clear, or are you following it? What I'm trying to say? Yes, sir. हाँ जी? Clear है, sir. Clear है. Okay. Now, let us see when the combustion takes place. ये मेरा सिलेंडर है और ऊपर से सिलेंडर कवर भी बंद है actually तो ये. So when the fuel burns, what we have? We have the pressure developed here. It acts on the top of the piston, which moves the piston down. Let us say if P is the pressure, P. What is the force? Force acting with the pressure into area. P is the pressure acting on which area? This piston is round thing with d diameter. So area is pi by 4 d square या pi r square. P is the pressure. Pressure multiplied by area. This is the force F, which is and the piston travels a distance L. So work done is force into distance. So work done is equal to force into distance is how much? That L, which is the stroke. This is in meters. Let us see the units also side by side. So the unit of area is in meter square and unit of length is meter we are taking. So we can say work done will be P into A. This is work done and work done is now let us say P also. P pressure is Newton per meter square. That is the unit in SI. We are dealing with SI only. So work done is in kilonewton meter. Then power. What is power? Power is rate of doing work. Rate of doing work is called power. And therefore power P is equal to PAL. Let me just remove a little bit of this from this side to get some space. P into A into L. If I multiply by N, what N is number of power strokes per second. So rate done per second. If there are in 1 second n number of power strokes,
Then in 1 second, because in that will be the work done. So plan. Power is plan. Answer is kilo. This is a formula for power which is used for calculating power from an engine. So we can say power is equal to plan in kilo. Only thing is there is some problem here which we have to sort out before we apply this formula. Although we will remember it as plan only, but there are some few things which need to be addressed. One is P. This P which we are saying is the pressure because of the combustion. But that is only when the fuel burns. As the piston travels down, 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 we have more space, more volume above the piston. Pressure keeps dropping. So which P to take? So that means P has to be mean pressure during the entire stroke. From here piston goes, pressure drops from peak pressure to the lower value of the pressure. So we must calculate what is the average or mean pressure. That so in this formula, this P we replace by PM, and that is how I will rub or clear this left hand side little bit so that we have more space for writing this. So again power is equal to PM instead of P into L into A into N. Now we have to only see how to calculate PM, but otherwise our formula is okay. Power in kilo. Then second thing is regarding the units. On board, when we check this the power calculation, what we are doing with the help of taking the cards. So what we do is we have indicator cog and then we attach that instrument. I will show you in the PPT, and we trace a PV diagram which is like this. Now this diagram actually represents from BDC to TDC position. As the piston moves from BDC to TDC, how is the pressure rising? So when it reaches max, this is the maximum pressure, we call it peak pressure, and then as the piston goes from TDC, finally somewhere here the exhaust valve opens and pressure drops, it comes back to this, then again it starts again. So this is what is happening in every cycle, and these cards are available. We get these cards using an instrument. Now here the instrument gives us these pressures in bar, not in kilonewton per meter square, correct? However, we know how to convert it in bar into, so 1 bar is equal to 10 raised to power 5 newtons per meter square. This is a conversion, or equal to, अगर मैं इसको 10 raised to power 2 into 10 raised to power 3 कर दूं, तो 10 raised to power 2 into kilonewton, 10 raised to power 3 becomes kilonewton per meter square. So if I am using calculating this pressure in bar, but I actually need in kilonewton per meter square, then I have to simply multiply it by 10 raised to power 2. So my formula becomes actually PM into L into A into N into 10 raised to power 2 kilowatt.
ये मेरा फार्मूला बन गया। अब सिर्फ एक चीज रह गई, फार्मूला करेक्ट हो गया, सिर्फ मुझे पीएम जो है ये चाहिए, विच इज द मीन प्रेशर, इट इज नॉट पीक प्रेशर एज वी हैव सीन कि यहाँ से चले तो कंप्रेशन प्रेशर होते होते फिर फ्यूल जल गया, तो ये मैक्सिमम प्रेशर है। पावर स्ट्रोक में भी वर्क डन के लिए ये प्रेशर कम होता जा रहा है ना, करता जा रहा है। आई नीड मीन प्रेशर। तो हम क्या करते हैं कि इसको, इसका एरिया ले लेते हैं यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पेनीमीटर, और इसका इसी बेस पे, सेम बेस, लेंथ सेम रखते हैं, विच रिप्रेजेंट स्ट्रोक, ये स्ट्रोक रिप्रेजेंट कर रही है स्केल ऑफ कोर्स। वी convert this area as a area of a rectangle where one side is same, only this side is the vertical side. So length, और ये वाला जो represent करता है, this is the mean pressure, because this was mean peak pressure, but with same area if I draw this will represent the mean pressure. उससे मेरे को ये PM मिल जाएगा, बस यही मुझे चाहिए, and then I can apply and calculate the power. So in order to calculate this PM, what I do is I will calculate the area of this diagram, and then let me create some more space here so that I can write what we are doing. So to calculate PM, now let me rewrite this formula. Power is equal to, this is my final formula for using in numericals. PM into K into K into N, ये फाइनल फार्मूला है। इससे क्या निकालेंगे हम, पावर। आंसर किस में आएगा, अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या, कि किस चीज की क्या है। पीएम निकालने के लिए मैंने क्या किया, एरिया निकाला इसका, ए स्मॉल ए, लेकिन प्लानीमीटर ये हमने निकाला है कार्ड के ऊपर, पीवी डायग्राम पे एक इंस्ट्रूमेंट में। सो मिलीमीटर में एरिया आता है, मिलीमीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय स्मॉल, दिस इज द लेंथ ऑफ द डायग्राम कार्ड के ऊपर जो मिलती है परफॉर्मेंस कार्ड पे, और ए इज द एरिया ऑफ दिस डायग्राम इनटू के। के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। So A is area of indicator card. Indicator card का area है मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर मिलीमीटर स्क्वायर में। L भी दिया होगा, L इज इन मिलीमीटर। क्या लेंथ ऑफ द डायग्राम is length of the diagram. और K is called the spring constant. K is called the, जो हम spring यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में, ये जो है K की जो वैल्यू है इज बार पर मिलीमीटर, बार पर मिलीमीटर, ये हम नोट करके रखेंगे। ये K जो होता है इंस्ट्रूमेंट पे एनग्रेव्ड भी होता है, वैल्यू भी पता है हमें, और न्यूमेरिकल में भी ये वैल्यू दी होगी, बार पर मिलीमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इंडिकेटर डायग्राम ली है और मैं इसको यहाँ से बेस लाइन से मैं ये मेजर कर लूँ कितने मिलीमीटर है, के से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा पीक प्रेशर कितना है। सिमिलरली जो इक्विवेलेंट एरिया है, अगर मैं यहाँ ये ले लूँ कितने मिलीमीटर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मीन प्रेशर कितना है ना। सो ये है बार पर मिलीमीटर, स्केल है ये एक्चुअली। तो ये मेथड है। तो इसमें सर एल इसमें ये देखो एल दो टाइप के हैं, इनको मिक्स मत करना कभी भी। पहला एल तो था इंजन का स्ट्रोक, ये मीटर में था, पीएम एल ए एन, ये सब कुछ इंजन के हैं पैरामीटर। और ये जो पीएम निकाल रहे हैं, ये स्मॉल एल इंटू के, ये स्मॉल एल लेंथ ऑफ द डायग्राम इन मिलीमीटर, नॉर्मली 72 या 74 मिलीमीटर के आसपास होती है ये, क्योंकि वो कार्ड ही स्टैंडर्ड कार्ड आता है ना डायग्राम बनाने का। एनीवे दिस इज स्मॉल ए, और ए इज द एरिया ऑफ दिस डायग्राम जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट के साथ। और ठीक है, क्लियर है। के बताना सर, के क्या था? के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग यानी कि अगर स्प्रिंग मेरा
दबा जो है दबा 1 मिलीमीटर दबा तो वो कितना प्रेशर से दबेगा। इसीलिए अगर ये मेरी उसने डायग्राम ड्रॉ करी है इतने मिलीमीटर, तो अगर मुझे ये पता हो तो मुझे पता चलेगा कितना प्रेशर है उसका। अगर मान लीजिए 50 मिलीमीटर है ये वाली चीज और स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, तो एक्स का मतलब है प्रेशर यहाँ पे 50 × 2 100 हो गया। 1 मिलीमीटर 2 बार के बराबर है वर्टिकल, ये मतलब होता है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये दिया होगा न्यूमेरिकल में आपको स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके हाथ में वो नहीं है ना, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जहाज पे तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसी पे के एनग्रेव्ड होता है, और स्प्रिंग अलग अलग होते हैं। यानी ये नहीं है कि हर इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग का वही होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट सिर्फ ये है कि अगर मैं उस प्रेशर को दूं, मान लो 2 है स्प्रिंग कांस्टेंट, 2 बार प्रेशर दूंगा तो 1 मिलीमीटर दबेगा। क्लियर है ना? तो दूसरा वाला हो सकता है दो बार प्रेशर में 1 मिलीमीटर की जगह आधा मिलीमीटर प्रेस हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग, इसलिए वो वही वाला लेते हैं हम। शिप के ऊपर तो हमें इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है तो वही वाला यूज करते हैं ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ऐसे है। सो दिस गिव्स मी द कैलकुलेशन ऑफ पावर। लेकिन यहां एक चीज का आपको ध्यान रखना है, n इज नॉट आरपीएम, n इज नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकेंड। पावर इज वर्क डन पर सेकेंड। अब नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकेंड, मान लो 2 स्ट्रोक इंजन है। यहां पे सिर्फ फर्क आता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या फर्क है, उसकी वजह से n की वैल्यू फर्क होगी। मान लो ये 2 स्ट्रोक इंजन है। अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होगा, है कि नहीं? 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक अभी तो हमने डिफाइन किया ना, दोनों में फर्क क्या है। 2 स्ट्रोक में हर रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट की एक पावर स्ट्रोक है, यानी हर रेवोल्यूशन में पावर जनरेशन हो रही है। 4 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन में एक बार पावर जनरेट होती है। अब हम लेते हैं आरपीएम और आरपीएस में डिफरेंस। आरपीएम आरपीएस, मान लो कि आरपीएम है 120, तो आरपीएस क्या होगी 120/60 इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड होगी। अगर आरपीएम होगी तो 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट होगी। आरपीएम पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर सेकंड 2। अब हम ये आते हैं कि अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक है, और हमें यहां चाहिए क्या है, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर सेकंड। तो जो भी आरपीएस होगी, एक सेकंड में जितने रेवोल्यूशन है उतने ही पावर स्ट्रोक होंगे, क्योंकि हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक है, तो एक सेकंड में जितने पावर स्ट्रोक होंगे वही एन है आरपीएस। तो इसलिए फॉर 2 स्ट्रोक, फॉर लिख के रख लेना कहीं पे अपना साइड में नोट में, फॉर 2 स्ट्रोक इंजन n is equal to n is equal to RPS for 4 stroke engine n is equal to RPS by 2, क्योंकि वो आधे होते हैं पावर स्ट्रोक ना, उसमें 2 रेवोल्यूशन में एक होगा, इसमें हर रेवोल्यूशन। तो n हमारा नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकंड ही है। लेकिन अब हम देखेंगे 2 स्ट्रोक है तो हम n की जगह क्या यूज करेंगे, आरपीएस। तो न्यूमेरिकल में पहले लिखा हुआ इन ए 2 स्ट्रोक इंजन दिस इज द डेटा गिवन, और इन ए 4 स्ट्रोक इंजन 4 यूनिट इंजन और 5 यूनिट इंजन, these are the पैरामीटर्स गिवन। तो आप सबसे पहले ये देखना कि वो 2 स्ट्रोक की बात कर रहा है या 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है। फॉर्मूला प्लान ही है, PMLAN × 100, यही है फॉर्मूला, हमने यूज करना है। लेकिन अगर तो 2 स्ट्रोक पूछ लिया उसने क्वेश्चन में, तो हमें पक्का पता है ये आरपीएम नहीं है, एन की जगह हमने आरपीएस। आरपीएस कैसे निकालेंगे, जो भी आरपीएम है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, वो आरपीएस आ जाएगा। एन की जगह हो जाएगी आरपीएस, बिकॉज इट इज नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर सेकेंड। फिर अगर तो उसने दिया 4 स्ट्रोक,
तब हम RPS by 2 करके यहाँ यूज कर लेंगे n इज इक्वल टू RPS by 2, ये वाला। तो ये हमें ध्यान रखना है वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 स्ट्रोक है n की जगह RPS आएगा, अगर 4 स्ट्रोक है तो n की जगह RPS by 2, एंड व्हाट इज RPS इज RPM by 60। ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया ब्रीफिंग टॉपिक की। अब हम आ जाते हैं PPT पे, वहाँ पे हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो लेट मी अनशेयर दिस। ओके, नाउ जस्ट कंफर्म दैट दिस PPT इज विजिबल। कोई भी एक जना बता सकता है। विजिबल है। ये जो है दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जहाँ जो हम यूज करते हैं जब कहते हैं ना पावर ले रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं, तो उस टाइम में ये इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। एवरी शिप हैज दिस। और ये जो राइट साइड में ये प्लानीमीटर, इसको एरिया निकाल किसी भी इरेगुलर फिगर का, रेगुलर का तो पता ही होता है ना हमें, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, जो भी है, इरेगुलर फिगर, वो PV डायग्राम जो हमारी है उसका एरिया निकालने के लिए इसमें एक ये जो हमारा यहाँ पे क्रॉस होता है, वो हम क्रॉस को अलाइन करते हैं डायग्राम से, और अराउंड द डायग्राम पूरा एक रेवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट किया पूरा शेप के अराउंड घूम, तो यहाँ पे ये स्केल पे एरिया आ जाता है मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो दिस इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स, जैसे कि वो PV डायग्राम है, और भी कोई इरेगुलर फिगर हो उसका भी आ जाएगा ये। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें ये ड्रम है, ये ड्रम जो है दिस विल मूव ओनली व्हेन दिस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड खींचेंगे अगर, तो ये कॉर्ड किससे कनेक्टेड है, एक ड्राइव होती है जिससे कि पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, तो उसके हिसाब से ये कॉर्ड पुल होगी तो ये ड्रम उतना ही घूमेगा। प्लस इसमें ये स्टाइलस है जो कि इस यहाँ पे कागज लगा लेते हैं, इंडिकेटर कार्ड। तो वर्टिकल मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम द सिलेंडर, एंड एंगुलर मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द movement on the piston. So stylus vertical movement because of the pressure inside the combustion chamber, and angular movement. Combination of the two gives us the PV diagram which is like this, ये वाली, यानी यहाँ से शुरू हुई ऐसे, ये कंप्रेशन स्ट्रोक है, BDC से TDC में जाएगा, तो ये प्रेशर जैसे जैसे राइज करेगा ये कर्व आना शुरू हो जाएगा उस पर, ये है मैक्सिमम प्रेशर। फिर यहाँ से पावर स्ट्रोक में धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप होते 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 यहाँ तक पहुंचा, फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया तो प्रेशर ड्रॉप किया, फिर यहाँ गया। ये दिस ट्रेवल इज लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम विच वी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एल, छोटा एल। और ये जो है एरिया इसका डायग्राम का इज गिवन बाय स्मॉल ए, मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया आता है इस डायग्राम का, और लेंथ ऑफ डायग्राम इज इन मिलीमीटर। अब हम इसका ये जो एरिया ले लेते हैं, यहाँ लिखा है A इन मिलीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायग्राम इन मिलीमीटर, और ये जो एरिया आया उसी एरिया को अगर हम L अनचेंज रखें तो वर्टिकल ऐसा उसी एरिया का L इंटू B करके सेम एरिया ले आए, सो दैट इज द मीन प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द मीन प्रेशर, एवरेज और मीन प्रेशर, वो हम फार्मूले में यूज करना होता है। तो A/L निकालते किस ढंग से हैं, IHP इज PM/Ln, ये तो फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, इंटू 10⁻², है ना, किलोवाट, एंड PM इज द मीन इंडिकेटेड प्रेशर, L इज द, अब इसमें आई हैव सीन पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड, कौन सा L क्या है। ये जो फार्मूले वाला कैपिटल L है ये स्ट्रोक है जो हमने लिखा ना, स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन BDC से TDC, दैट इज L।
इन मीटर्स। पीएम जो है वो अलग से हम निकालते हैं ए बाई एल इंटू के से, है ना। ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, पाई बाई 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। एन इज द number of power strokes per second, which is RPS in case of 2 stroke, RPS by 2 in case of a 4 stroke engine। ये हमें ध्यान रखना है। छोटा l और a जो है वो एरिया है। PM इज इक्वल टू a बाई एल इंटू के। ये डायग्राम के डिटेल्स हैं। जो इंडिकेटर डायग्राम हमने ये वाली ली है, दिस डायग्राम, इसका एरिया स्मॉल मिलीमीटर स्क्वायर में है और L इज द लेंथ ऑफ दिस डायग्राम। ये हमें वो कैपिटल L वाले से मिक्स नहीं करना है किसी भी हालत में। So this is only in meter square, this is only in millimeter. K is bar per millimeter, which is called the spring constant. इससे हम PM निकालते हैं बार में, because this is bar per millimeter. K is the spring constant in bar per millimeter. तो A square millimeter square by millimeter, तो millimeter मीटर कट गया, millimeter रह गया, bar per millimeter वो भी कैंसिल हो गया, बार रह गया. So that is how it gives me the PM gives me the pressure in bar. और इस क्योंकि प्रेशर मेरा बार में आया है इसीलिए वो इस फॉर्मूले में 100 भी आया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही चाहिए SI यूनिट्स में, इसलिए ये 10 स्क्वायर भी आ गया। दिस इज सिंपली, अगर हम यहाँ प्रेशर हमें किलो न्यूटन में पता होता तो ये 10⁻² नहीं आता। ये हमारा इसीलिए आया क्योंकि हमने मेजरमेंट बार में किया है, लेकिन हमें यूनिट यूज करनी है SI की। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। तो लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। एरिया ऑफ एन इंडिकेटर डायग्राम टेकन ऑफ one cylinder of a 4-cylinder 4-stroke internal combustion engine is 384 millimeter square. The length is 72 mm and the indicator spring scale is 1 millimeter is equal to 2 bar. Diameter of the cylinder is 260 mm. Stroke is 310 mm. Rotational speed is 300 revolutions per minute. Calculate the indicated power of the engine, assuming all cylinders develop equal power. ठीक है, चलिए करिए इसको।
So 43.87 kilonewton. किलो न्यूटन क्या चीज? पावर तो किलो न्यूटन में नहीं है। 43.87. पावर निकालिए। पावर किसकी क्या यूनिट है? किलोवाट। किलोवाट, unit of power is kilowatt. Unit of force is kilonewton, or rate of doing work, so kilonewton meter per second is 1 kilowatt, है ना? 1 kilonewton meter per second is 1 kilowatt. So power की यूनिट है किलोवाट। अच्छा, हाँ, आपने क्या निकाली? 43.87 सर। 43.8 is only partly correct. वैसे आपने अच्छा निकाला है, फटाफट निकाल दिया, लेकिन ये पावर इंजन की नहीं आई है जो आपने निकाला है, ये 1 यूनिट की आई है। इसलिए आपको आंसर के लिए कितने यूनिट हैं इसके अंदर? एरिया ऑफ एन इंडिकेटर डायग्राम टेकन ऑफ 1 सिलेंडर ऑफ ए 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, 4 यूनिट हैं उसमें। और ये जो कैलकुलेशन करते हैं 1 यूनिट की पावर आई है, तो उसको अगर तो सारे सिलेंडर में इक्वल पावर हो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो टोटल पावर आएगी। ठीक है, ओके सर। तो अब जो आपने निकाला है वो आई 1 सिलेंडर की। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर द पावर ऑफ द इंजन इज, सिंस देयर आर 4 यूनिट्स, 4 इंटू पावर ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू जो भी आपकी आई है कितनी 43.8 या 43.9 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट विल बी द पावर ऑफ द इंजन। शिप पे भी तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग कि हर यूनिट के कार्ड लेते हैं, चाहे वो 10 हो चाहे 11 यूनिट हो, आजकल तो 14 यूनिट है, सबके कार्ड लेंगे, सबकी अलग अलग पावर निकलेगी, उसके बाद ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल में इजी करने के लिए उन्होंने कहा भाई सब में बराबर पावर है, एक की निकाल लो और जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो ताकि टोटल पावर आ जाए। तो एजम्पशन है कि ऑल सिलेंडर्स आर डेवलपिंग इक्वल पावर। एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। एवरी यूनिट इज डेवलपिंग स्लाइटली डिफरेंट पावर। सर 175.5 into 10 raised to power 9 kilowatt. 10 रेज टू पावर 9. वो कहाँ से आ गया इतना? ये 10 रेज पर 9 कहाँ से आया? इसको जो mm में है सर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो नहीं आएगा। 260 mm है। एमएम में किसको कन्वर्ट किया? सर ये जो उसका डायमीटर दिया सिलेंडर का, इसको जो और उसका जो स्ट्रोक दिया, इसको जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, 1000 से डिवाइड करेंगे ना सर इसको। ओके, ये तो 0.26 मीटर हो गया और ये हो गया 0.31 मीटर स्ट्रोक। आपका आंसर तो 175 ही आएगा किलोवाट में। जैसा वही है 175.6 किलोवाट। बस उतना ही आएगा, और 10 रेज टू पावर वगैरह कुछ नहीं आएगा साथ में। हाँ सर, वो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया इसलिए आ गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो एक्चुअली ना उसको पंगा मत लो।
मीटर के इसमें हमेशा गड़बड़ होने के चांस, सिर्फ आप इसमें यूज ही मीटर में करो सारा फॉर्मूले के अंदर। 0.26 मीटर कर लो इसको, डायमीटर को 0.26 का कर लो, स्क्वायर में क्या फर्क पड़ता है। एरिया जो है या तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखो करोगे, या पाई आर स्क्वायर लोगे। आर लेना है तो उसको 0.13 ले लो, सीधी सी बात है। और स्ट्रोक जो है 0.31 हो गया, कैपिटल एल इज 0.31, और डायमीटर रेडियस ले लो इसका 0.13। ये सब मीटर का मीटर में ही रहा। अब इसमें डाल लो पाई आर स्क्वायर, ए निकाल लो, पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आ गया। स्ट्रोक एल इज इन मीटर। एरिया जब पीएम निकाल रहे हो वहां ए विल बी 384, एल विल बी 72, के विल बी 2, और जो आंसर आया वो आ गया बार में। फिर उसको आप पुट कर दो, फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा है PML प्लान इंटू 100 किलोवाट में आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से। सबका आ गया है या किसी का भी बाकी है? क्लास तो काफी अच्छी बड़ी है, किस सबका आ गया है कि नहीं आ गया है? आया नहीं, अभी कर रहा हूँ। कर लीजिए, डोंट वरी। देखो सब कुछ सिंगल लॉगिन और सिंगल पेमेंट के साथ ट्राई करके देखो।
सबका आ गया ये किसी को बाकी है? Anybody who has not understood? Because if I have to ask every time and you people are not responding, I don't know why. सर पूरा क्लियर नहीं हुआ है ये कर रहा हूँ। तो आप बोलते क्यों नहीं हो? इतनी देर से मैं बैठा ही हूँ ना, सिर्फ आई एम सिटिंग हियर जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल ओनली कि वो ठीक है, अगर क्लियर हो गया नहीं हो गया, सो मेनी टाइम्स आई एम आस्किंग and still you are not answering anything. Okay, so what is not clear anyway, I'll just give you the how it is done. Formula is PM plan into 100, that we have already established. PM is equal to A by L into K. 384 by 72 into K is given 2 bar, so you will get 10.66 bar as the mean indicated pressure or mean pressure. Number of power strokes per second n is given by 300 by 60. 300 is the RPM. Since it is a 4-stroke engine, it will be divided RPS by 2, 2.5. Using the formula plan into 100, 10.66 is the pressure you calculated here, multiplied by L. L is 0.31 is the stroke into pi d square by 4 is the area. A. L is 0.31, A is pi d square by 4, and N is 2.5. That's it. 0.439 into 100 or 43.9 kilowatt. This is for 1 unit. Total indicated power for 4 cylinders, assuming all cylinders are developing same power, will be 4 into 43.9 is equal to 1.